Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at NIT Polytechnic Nagpur for the Department of Electronics and Telecommunication. Today I am going to deliver lecture on Introduction to Embedded System, and I will be going to discuss about block diagram of embedded system with hardware. The course outcomes for this course as select the relevant microcontrollers for various industrial application. It means by using different microcontrollers we can develop the different industrial application along with embedded system. What are the learning outcome? After the completion of this course, students should be able to describe the given component of the embedded system, describe with the help of block diagram the architecture of given. So, what is system? Before going to the embedded system, we must have to know about the system. The system is also an arrangement. क्या है? A system is also an arrangement in which all its units assemble and work together according to the plan or program. मतलब क्या होगा? जैसे ऐसा एक सिस्टम जहाँ पे आप लोगों को कैसे वर्क करवा के लेना है और कितने पैरामीटर्स उसके एक जगह पे होने चाहिए, उसको एक दूसरे के साथ काम करना अकॉर्डिंग टू द प्लान, मतलब कैसा प्लान किया है और द प्रोग्राम. सिस्टम इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट इन विच all its units assemble and work together according to the plan or program is called as a system. Best example for it is nothing but your watch. It is a time display system. तो ये वॉच का काम क्या होता है? वॉच को एक ऐसे जैसे बताया गया रहता है कि 1 घंटे में उसके दोनों हैंड को इतना घूमना है, मतलब एक प्लान है. प्लान है मतलब क्या कि जो भी सिस्टम है उसमें अरेंजमेंट किया हुआ है जिसके उसके पूरे के पूरे पार्ट्स एक जगह पे असेंबल किया है, कंबाइन किए हैं, और वो पूरे के पूरे पार्ट्स जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. वॉच भी वैसे ही करता है. वॉच क्या करता है? उसके दोनों हैंड अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड वो वर्क करता है. दैट्स वाई वॉच इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सिस्टम. देन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द, वो कंसिस्ट क्या करता है? तो हार्डवेयर, नीडल्स और बैटरी. सभी को पता है, मतलब ये क्या हो गए उसके हार्डवेयर कंपोनेंट. अभी देखो, दिस इज द वॉच. दिस वॉच में दीज आर द 2 हैंड्स ऑफ दिस वॉच, बराबर है. तो ये जो वॉच है दिस इज कंसिस्ट ऑफ द हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर. मतलब सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे इसके पूरे के पूरे पार्ट एक जगह पे असेंबल कर रहे हैं और वो पूरे पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलके जो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लान, दैट्स कॉल्ड एज अ सिस्टम. समझ में आया? सो नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो एम्बेडेड सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. क्या है? हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. लेट्स कम टू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. सो व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम? देखो यहाँ पे दिया हुआ है an embedded system. An embedded system is one that has a computer hardware with a software. मैंने पहले ही बताया है कि it is the combination of hardware and the software. Means an embedded system is one that has computer hardware with software embedded in it as one of its component. मतलब अगर हार्डवेयर से बॉडी बनी है तो सॉफ्टवेयर को आप लोग एक कंपोनेंट करके उसके साथ अगर कंबाइन कर रहे हो तो तब जाके जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ एम्बेडेड सिस्टम. समझ में आया? देन नेक्स्ट उसको अपन ये भी बोल सकते, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो एंड परहैप्स additional mechanical or other part designed to perform a dedicated function.
क्या करना है, जो भी गिवन फंक्शन उसको दिया है उसको परफॉर्म करने के लिए अगर उसके हार्डवेयर के साथ साथ अगर अपन सॉफ्टवेयर को कंबाइन करें और उसकी एक पर्टिकुलर बॉडी बनानी है तो उसके लिए अगर अपन मैकेनिकल पार्ट्स को यूज करते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या, एम्बेडेड सिस्टम. In some cases, embedded systems are part of larger system or product, as is the case of anti-lock braking system in a car. क्लियर. ऐसे हो सकता है एम्बेडेड सिस्टम में, जैसे कि अगर लार्जर सिस्टम और प्रोडक्ट हो, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है कार में, उसको भी अपन एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हैं. अभी एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तो जैसे भी घर के जो भी अप्लायंसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सब में एम्बेडेड सिस्टम है. दैट इज फॉर द एग्जांपल वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा. अभी आप वॉशिंग मशीन को कैसे बोलते हो, तो वॉशिंग मशीन जो है वो एक सिंपल सा एग्जांपल है. देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ आप लोग को व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम. ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट साइज, लो कॉस्ट and a simple design aspect made embedded system very popular. क्या होता है, किसके वजह से, उसके कॉम्पैक्ट साइज, लो कॉस्ट और सिंपल डिजाइन के वजह से एम्बेडेड सिस्टम इज वेरी पॉपुलर सिस्टम एंड एनक्रोच्ड इनटू ह्यूमन लाइफ एंड हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल. ठीक है. अभी इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो एम्बेडेड सिस्टम का कॉम्पैक्ट साइज क्यों होता है, तो जो भी सिस्टम आप बनाते हो उस सिस्टम में आप सिर्फ एक एम्बेडेड सिस्टम को नहीं लगाते हो, उसमें आप लोग नंबर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को एक जगह पे कनेक्ट करते हो, जिसके वजह से आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है. तो देयर आर सम, अभी देखो, दे आर फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम किचनवेयर टू स्पेसक्राफ्ट. मतलब आपके घर के होम अप्लायंसेस से लेकर के स्पेसक्राफ्ट सभी जगह पे एम्बेडेड सिस्टम है. देखते हैं एग्जाम्पल. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, जिसमें आप लोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कार, एरोप्लेन, चिप, माइक्रोवेव ओवन, कैमरा, प्रिंटर और फैक्स मशीन, ये जितने भी डिवाइसेस है, दीज आर द डिवाइसेस मेड अप ऑफ embedded system. मीन्स ये जितने भी पार्ट है, these all are the parts of the combination of hardware and the software. That's why these are the best examples of embedded system. Then what are the applications of embedded system? आपको जब सभी को पता है कि जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिए कि कैसे कैसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स है एम्बेडेड सिस्टम में, तो अभी एप्लीकेशन दिखते हैं कि ये एम्बेडेड सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्बेडेड सिस्टम यूज इन द बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन. अभी ये बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन से सिस्टम्स में यूज होता है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास ईसीजी रिकॉर्डर. ये क्या होता है ईसीजी रिकॉर्डर, देखो आप लोगों को सभी को दिख रहा है, दिस इज द ईसीजी रिकॉर्डर used in the medical requirement. That's why it is the best example in the field of biomedical instrumentation for the embedded system. Then the second one is the patient monitoring system. देखो, this system also consists of the hardware as well as the software. That's why this is also the best example for the system. Then for the communication system, there is a cellular phone or the fax and trans receiver. These are the cellular phone and this is the fax trans receiver. Then next one is the video game and the cable TV terminal. This is the video game and this is the cable TV terminal. These are also the example of MD. Then peripheral controllers of computer. What are the different peripherals? That is DMA controller and the 3D printer controller. This is the DMA controller where we have used the embedded system, and this is the 3D printer controller where we are use the system. Then where we use the embedded system in the industrial instrumentation, so we can use it for the robotic system as well as the CNC machine controllers, such as this is the robotic system.
This is the CNC machine controller, and we can also use it for the closed loop engine controller and the industrial moisture controller. This is the closed loop engine controller, and this is the industrial moisture controller. This system also consists of the hardware as well as the software. Then why we use the microcontroller to make the embedded system? So the microcontroller is a single silicon chip. A microcontroller is a single silicon chip with memory and all input output peripherals on it. We have also learned it in the fourth semester for the subject microcontroller and application. So I hope everybody knows about the microcontroller and its feature. And hence a microcontroller is a single silicon chip with memory and all input output peripherals on it. Normally a single microcomputer has a following features such as arithmetic and logic units. Such we also know about the ALU, which consists of the different mathematical program or mathematical representation we can use to represent a mathematical equation. We can use here the arithmetic and logical unit. Memory for storing the program, EEPROM for non-volatile data storage, RAM, that is the read access memory for storing variables and special function registers, input and output ports. आप सभी को पता है how many ports are there in the microcontroller? There are mainly 4 different ports for the microcontroller, out of which some of them are used for the input side and some of them are used for the output side. Timers and counters, analog to digital converter, serial communication port. Serial communication port में भी आप सभी को पता है what is UART और USART बराबर है. These are the serial communication port. Let's start with the layered architecture of embedded system. So this is the diagram which shows the layer architecture of embedded system. It consists of the hardware, software and the operating system. Hardware, software and the operating system. So it is from this diagram, it is completely shows that this hardware is completely dependent upon the operating system, and this operating system is completely dependent upon the application software. Without hardware we cannot run the operating system, and without operating system we cannot run the application software. That's why the hardware in the embedded system contains the memory chips. ये जो hardware है in the embedded system contains of memory chips onto which the software is loaded. It is called as a firmware. उसको क्या बोलते हैं अपन? It is called as a firmware. Everyone clears about the layered architecture of embedded system? The question asks such as, draw the layer architecture of embedded systems. Question asks for the 2 marks. You have to draw this diagram in this, and you have to put these names such as hardware, software and the operating system. So this diagram shows input device, central processing unit, read-only memory, random access memory, output devices, communication interface, application specific circuitry and the frequency generator. This is the complete hardware architecture of block or the block diagram of embedded system. Out of which input devices, we can use the input devices such as the sensors, buttons, touch panels as an input device, and we can get the output by using the LED, LCD, etc. So this block which shows the complete unit which consists of read-only memory, random access memory and the central processing unit, it is called as the microcontroller. It means without using controller we cannot get the output. We cannot get the output. So what is the use of this controller? Actually the controller is used to control the system by using the different parameters, in which we get
read-only memory, random access memory, and the central processing unit. This central processing unit consists of arithmetic and logical unit, read-only memory, and the random access memory, out of which arithmetic logic unit consists of which performs the operations such as the arithmetic and the logical operation. Read-only memory, it is a permanently stored memory which consists of the runtime data memory, and the random access memory consists of the code memory. Means whenever we write down the program for any system, that program or that code must be stored in the random access memory. Then we also use here the frequency generator. If we want to generate some signals, that signal consists of the different frequencies. So by using this frequency generator, we can generate the signals, and here we use the crystal oscillating frequency, that is nothing but the 12 megahertz. Then after this we also use here communication interface. So what are the different communication interface? In the communication interface we can use here the ब्लूटूथ मॉड्यूल, उसके बाद में कोई वायर और वायरलेस जो भी मॉडेम्स रहते हैं ब्लूटूथ के, उसको भी अपन यूज कर सकते हैं. Then whatever the different application we want to do for the embedded system, this application specific circuitry consists of that particular industrial application which we are going to develop by using the embedded system or this complete hardware architecture. I hope everyone understand about the input device, output device. This is the microcontroller, frequency generator, and the communication interface. This hardware architecture consists of the central processing unit, memory which is nothing but the read-only memory, and the random access memory. Input device which consists of the sensors, buttons, touch panel, I already told you. Output devices such as the LED, buzzers, LCD display. उसके बाद में कम्युनिकेशन इंटरफेसेस में यूज कर सकते हैं अपन ब्लूटूथ, मॉडेम्स और एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट. देन what are the different features of embedded system? In the embedded system there is a one feature, that is the single function. It means it executes the single program and we can repeatedly do the operation for the particular system. That's why it is the best feature of this embedded system. Then tightly constrained, what it means? It means it is having the low cost, low powers, it's small and fast in working. It is the life-threatening device. It is reactive and real-time application. As we also say that what are the different applications of the embedded system, we all go through that particular examples of embedded system and how they are working, we also know about it, right? It means what kind of real-time applications are there, such as the watch, washing machine, car, Max 3D printer, fax machine. These are the real-time applications of the embedded system. Why it is called as the reactive? That's why it continually reacts to changes in the environment system. जैसे जैसे environment system में changes होते जाएंगे, वैसे वैसे embedded system में भी changes होते जाएंगे. It must compute the certain results in real time without delay. जो भी अपन delay देंगे प्रोग्राम में, उस टाइम पीरियड में वो अपना वर्क कंप्लीट करने की पूरी तरीके से करेगा. Then this lecture summarizes as describe the given component of the embedded system. It means we learn in this lecture about the given components of the embedded system and we can able to describe this component of the embedded system. Then we have also learned about the help of the block diagram and the architecture of the given processor. Probably ask question on this topics such as define embedded system, why we use microcontroller for the embedded system, and explain with block diagram working of embedded system. Thank you. Thank you so much for listening the lecture. In the next lecture we will study about Harvard and von Neumann architecture, CISC and RISC processor. Thank you. Thank you so much.